Hey, thank you so much for tuning in to a new episode of Cut to Movies with Vivek and Viru. Just before we dive in, we'd like to give you a disclaimer that this episode is filled with spoilers. So please do watch the film first. Unless, of course, you don't have an issue with spoilers, in which case. Hello and welcome to another show of Cut 2 with Vivek and Viru. And today we bring you a very special film. We are traveling back in time to, I think, 1959. And we are going to talk about a film which is touted to be the worst film ever made. Vivek, tell us about it. We're talking about a film called Plan 9 from Outer Space. It's about an alien duo who arrive on Earth to try and raise the dead because they want to overtake the planet, while Earth's military tries to keep those activities a secret. This film is directed by Ed Wood. It's utterly dreadful, but and it's the pinnacle of bad good films. Extremely mediocre acting, terrible sets, ludicrous plot, awkward dialogue. It's so bad. This film is good. What do you think? Absolutely, it's so bad that it's good. इतने सारे पिक्चर होते हैं ना जो मतलब you just watch to see how the hell were they made, right? Yeah. I mean, ये फिल्म को कुछ golden turkey award मिला था, and that is when it kind of became famous. मतलब no one really knew about it too much and all of that, कुछ देखते नहीं थे. But ये golden turkey award जब उसको मिल गया, उसके बाद पब्लिक ने बोला अरे ये पिक्चर देखते हैं. तो वो होता है ना, फ्रेंड्स लोग बैठते हैं और बोलते हैं लेट्स वॉच ए रियली बैड फिल्म, वैसे करके वो लोग ऐसा. एंड वो फिर वो देखकर इट काइंड ऑफ पिक्ड अप एंड अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड वाचिंग इट. इट इज लाइक द पीक ऑफ श्लॉक हॉरर फिल्म्स. श्लॉक हॉरर एकदम लो बजट हॉरर फिल्म कैसे तो बनाया टाइप का. अपना वर्जन बोले तो इनफैक्ट रामसे ब्रदर्स वर बेटर, बट हाँ रामसे ब्रदर्स स्टाइल बट इवन वर्स. एकदम कन्वीनियंट घोस्ट्स बना दिए हैं और कुछ भी ऐसे हो रहा है, कुछ डायलॉग पे कुछ ध्यान नहीं दिया है, जो बोलना है बोल दिया, ऐसे टाइप का चल रहा है उसमें. टोटल नॉनसेंस. आई मीन Completely. didn't realize, मतलब I really don't know how they managed to keep a straight face, right, during the film. Exactly. And Yeah. in fact, it seems that for them it was like serious horror, Serious. science fiction, Yeah. extravaganza. For the director as well as the actors, they were like, we are making history, boss. Yeah. We are making E.T. Steven Spielberg जैसा फिल्म बना रहे हैं. Basically, they bring the dead to life, right? उसके बाद मेरे को समझा नहीं वो are they supposed to be like zombies or vampires? What is it, man? क्योंकि कुछ ऐसा 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 हाथ रख के वो फ्रैंकेनस्टाइन स्टाइल चलते हैं, which is like a dead man walking, which is zombie. और उसके बाद ये वैम्पायर स्टाइल में भी चलता है ऐसे मुंह ढक के. It was crazy. At one point, I was also thinking that are they really serious about this film? Because everyone was acting with so much of conviction, and there was this really some message that they are giving out to the audience. क्या मतलब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? And that vampire that you're talking about, who's walking with that drape covering his face, मतलब he reminded me of Crime Master Gogo from Andaz Apna. मतलब क्या हो रहा था कैरेक्टर्स में, हो क्या रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा. एंड you remember that scene where somewhere at the fag end of the film where again that drape guy comes, no, this time the burly guy, then the inspector kind of comes and he's walking and he's about to kind of scare the police inspector and the woman sitting in the car. And when he goes to the woman sitting in the car, she screams, but she's not moving. I mean, she's not even trying to escape. And that guy's so slow, but she's still not trying to escape. What was happening in the film? I have no clue. और डायलॉग्स क्या मस्त है यार. मतलब डायलॉग सुन के मेरे को सीआईडी की याद आ गई बॉस. उसमें इतना जैसे एकदम ऑब्वियस बोलता है ना, उसमें स्टार्टिंग का मोनोलॉग में ही चालू होता है फ्यूचर इवेंट्स विल हैपन इन द फ्यूचर करके टाइप का डायलॉग है. करेक्ट. और फिर वन थिंग इज फॉर श्योर, वो ऐसे डॉक्टर वो मारा होता है, वो इंस्पेक्टर मारा होता है, दूसरा इंस्पेक्टर आता है और वो दूसरों को बोलता है वन थिंग इज फॉर श्योर, ही इज डेड एंड समबडी इज रिस्पॉन्सिबल. तो मैं बोला ये तो
ये तो दया की तरह है, दया कुछ तो गड़बड़ है. गड़बड़ है. I think when I started the film, when I read about it as in the summary and I started the film, हाँ. I didn't really think that it would be a bad good film. But I think in the first scene, right, वो जो funeral scene से शुरू होता है, I saw on the ground the हाँ. carpet was Correct. almost there. Right, and then the acting was bad. I was like, ठीक है यार, 56 में acting शायद खराब हो सकती है और set हाँ. भी शायद खराब हो सकता है. But then when that lady emerged, right, with those long nails and all that, Correct, correct, oh correct. my God. And then I was like, yeah, this is not something that is going to be what I'm expecting it to be. So I think that disclaimer needs to be given to people that if you want to get high and watch a bad good film, this is like the right recipe for a great evening. Absolutely. And so there is a lot of story behind it. वो मैं actually ये Ed Wood के बारे में then I was like intrigued because he's like उसको best worst director का भी award मिला उसके साथ. So I was like कुछ तो होगा ना. I mean इसने 4-5 पिक्चर बनाया. Who is this guy? So I started looking at it and then I realized that Tim Burton made a film on this guy. So he has a film called Ed Wood. And वो फिर मैंने देखा. So I watched Ed Wood and it is like a brilliant film made by Tim Burton. और उसमें he kind of you kind of see what this guy is like. The Ed Wood guy जो था director, वो basically he didn't have talent but he had a lot of passion. उसको लग रहा था कि मेरे पास बहुत vision है, मैं फिल्म फटाफट बना देता हूँ. तो वो लोग 6-7 सीन करते थे, वो 30 सीन एक दिन में उड़ा देता था. तो पिक्चर पूरा ऐसे 4 दिन के अंदर उड़ा देता था. ऐसे सब वो शूटिंग कर रहा था, राइट. और फुल जुगाड़ में, राइट. वो उसने ऐसे स्टॉक वीडियोस वाले एक बंदे को जो होता है वो कैमरामैन जो रील वाला बंदा होता है ना थिएटर्स में और एडिटर्स रहते हैं, उनसे बात करके रखता था. एंड जो वेस्ट स्टॉक फुटेज रहता था वो लोग उसको दिखाते थे कि देख ये स्टॉक फुटेज है. तो उसको एक स्टॉक फुटेज मिला, वो जो इसमें बैटल सीक्वेंस है देख कि ऐसे आर्मी जनरल खड़ा है और बहुत सारे रॉकेट छोड़ रहे हैं. करेक्ट. हाँ, रॉकेट छोड़ रहे हैं और दैट इज अ हिलेरियस सीन कि रॉकेट्स जा रहे हैं ऊपर और वो एक ऐसा टिन कैन ऊपर एलियन स्पेसशिप उड़ रहा है जिसको लग नहीं रहा है. सो दैट इज बेसिकली an afterthought. So he found this footage and then he thought कि भाई अरे मेरे पास ये footage है जिसपे मेरे को एकदम मस्त ऐसे एक्चुअल वॉर के शूट मिले और इसके ऊपर मैं क्या बनाऊं. तो then he thought कि अच्छा what if they are like shooting aliens. And then he added this whole thing about dead coming to life and all of that shit. राइट. सो उसने मतलब वो फुटेज देखकर वो डिसाइड करता. उसका दूसरा एक फिल्म था जिसके अंदर ही हैड दिस ग्रेट शॉट ऑफ एन ऑक्टोपस इन द वाटर, ब्यूटीफुल शॉट. तो वो बोला अभी मैं कुछ बनाऊंगा जिसमें ऑक्टोपस एंड में आके आदमी को पकड़ लेगा टाइप, राइट. तो वैसा वो जुगाड़ू बंदा था और वो मतलब उसको कोई क्रू व्रू मिलता नहीं, ना उसको कोई पैसा देने वाला था. तो वो बेसिकली कैसे भी जीरो बजट में कैसे करना है, अपना थोड़ा बहुत पैसा लगा लिया या कोई एक्टर ढूंढ लिया जिसका बाप का पास पैसा है या वो एक्टर डाल देगा पैसा, उसको डाल दिया. तो दैट इज व्हाई दे आर लाइक ऑल यूजलेस एक्टर्स. ही फाउंड दिस गाय हु इज अ रेसलर, जो ये जो इंस्पेक्टर बनता है बड़ा वाला, द बिग मॉन्स्टर. करेक्ट. तो वो रेसलर को बोला कि तू मेरे फिल्म में कर, ऐसे करके उठाया उसने. एंड दिस एंड उसको ना मतलब बेसिकली ही फाउंड दिस जो मुंह छुपाने वाला बंदा था ना, द ओल्ड गाय. गोगो. He is the biggest actor. He's called Bela Lugosi, and he was like a big star when he was like in his heydays. तो ये and अभी he's like a wasted star जब उसको ये मिला. And Ed Wood was a great fan of Bela Lugosi. तो वो बोला कि तू मेरे फिल्म में आ जा, कुछ नहीं करना है तेरे को, ज्यादा देर नहीं कुछ करना है, मैं तेरे को थोड़ी देर के लिए यूज करूंगा, बट यू आर द स्टार बेसिकली नेम. तो देन एंड ही बेसिकली डाइड इन एंड उसने ना फिल्म चालू भी नहीं की थी. उसने सिर्फ ऐसा ही एक स्टार्टिंग में एक ऐसा रोल लिया था, उसका ऐसा बी रोल टाइप का शूट किया था बेला लुगोसी का. देयर इज अ शॉट इन विच ही कम्स आउट ऑफ द होम एंड देन बाहर पे एक फूल तोड़ के वो ऐसे स्मेल करता है स्टार्टिंग में.
हाँ. That was the only shot he had of this guy. Okay. बाकी जो भी है ना वो एक बॉडी डबल उसने उठाया, इसके लिए वो मुंह छुपा के रहता रहता है. Oh. अच्छा. तो ऐसा करके जुगाड़ करके उसने पिक्चर बनाया. तो देन यू रियलाइज कि चल यार वो मतलब ना पैशन के लिए कुछ कर रहा था, बट इट वाज लाइक horrible. He didn't have vision, he didn't have the money, he didn't have the expertise to do it. He was like just I am a great writer, I'm writing something spectacular and I'll do it. वैसा करके. When you were talking about Tim Burton also, I was just thinking some of the characters would resemble like Edward Scissorhands का inspiration कहीं से उसको आया होगा Correct, जहाँ से. correct. वो वैम्पायरा जो है, वैम्पायरा वो जो हाँ. चलती है, she was हाँ, actually हाँ. a TV star जिसको इसने उठा Okay. लिया था उसमें. एंड देन Okay. आई थिंक वैसा टाइप का एस्थेटिक उसने बहुत सारा टिम बर्टन ने कंटिन्यू किया आफ्टर दैट, राइट? Yeah, yeah. So basically, are we trying to say that he was super talented because he at least inspired directors like Tim Burton or even Steven Spielberg to think about a film on aliens and spaceships? हो सकता है. हाँ. What science in this film, man? What science अरे, was? I love the मतलब magnetic guns. My हाँ, magnetic the guns were my magnetic favorite. guns and वही लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रोड शॉट मारता है. वो हाँ, मैं हाँ, 2 हाँ, बार हाँ. सुना. वो पिनियल एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे लॉन्ग डिस्टेंस शूट मार के they bring Correct. them to life, and that got Correct. me thinking कि इसके पीछे कोई साइंस है क्या. And they actually there was this guy हाँ. who brought the dead to life, which is called, he was called Aldini, Giovanni Aldini. हाँ. और उसने बेसिकली एक साइंस एक्सपेरिमेंट किया था हाँ. where he had brought मतलब वो डेड पीपल पे एक्सपेरिमेंट करता था और वो इलेक्ट्रोड शॉट्स मारता था हाँ. और उसके बाद लिम्स वुड मूव. तो ये उसका बेसिकली कुछ एक्सपेरिमेंट टाइप का था जियोवानी आल्टीनी का, जिसका एंड आई थिंक वो फ्रैंकेनस्टाइन वगैरह सबके ऊपर, वो फ्रैंकेनस्टाइन वाज आई थिंक बिफोर दिस. तो फ्रैंकेनस्टाइन वगैरह का जो स्टोरी लिखा था वो ये वाले एक्सपेरिमेंट से इंस्पायर हुआ था. और उसके अच्छा. बाद ये साइंस उसने यूज किया, ये बंदे ने यूज किया, लाइक ही यूज्ड डेड, ब्रिंगिंग डेड टू लाइफ, हॉरर plus alien plus comedy. I mean, this was mostly a comedy. Yeah. Unintentionally funny, I think. Unintentional comedy, man. Yeah, but I think the favorite part of science, my favorite part of science in the film was when that electrode gun stops working, that woman is holding, and she actually, bangs the gun like how we bang an AC remote. जब चलता नहीं उसको, अरे बैटरी खराब हो गया और फिर वो चलना चालू हो जाता है. चलना चल रहा है. So that is intentional humor. That was insight, human insight निकाला उसने. Oh my और God, सच में मैन, क्या क्या चीजें उसमें यार, अमेजिंग. बट ये सबसे घटिया मतलब एलियंस, सबसे इनकॉम्पिटेंट एलियंस बनाया. इतने यूजलेस एलियंस, मतलब ह्यूमंस ही है. मतलब देयर ही डिड पुट एनी एफर्ट इन लाइक मेकिंग द एलियंस एनी मोर एलियन. हाँ, मतलब और उसका प्रोडक्शन कॉस्ट और भी चला जाता हाई, और उसमें भी अगर वो जुगाड़ करता तो आई कांट इमेजिन, इट वुड लुक लाइक वो शिरीष कुंदर की जोकर फिल्म है ना जिसमें एलियंस थे, वो कैसे दिखते Oh थे. man, हाँ dude, वैसे. big competition to this film. Yeah, Shirish Kundar's 100%. Joker was वो क्या पिक्चर थी, mind blowing man. Yeah, but if there was a contender for the worst film, I think जोकर ही होगी ना वो इस जॉनर में, I think. हाँ, मतलब आई थिंक हाँ, मैंने तो कोई ऐसा sci-fi पिक्चर नहीं देखा है जो इतना खराब. इतना खराब हो. करेक्ट. तो एक्चुअली देयर इज अ फिल्म कॉल्ड द रूम. हैव यू सीन इट? टॉमी विसू का, टॉमी विसू करके एक बंदा है. द रूम. नहीं, I don't think so. Okay, then you must watch that film and probably we should talk about that. Okay. Is it worse than this one? So that was also supposed to be one of the worst films ever made. Tommy Okay. Wiseau का डायरेक्टर एक पिक्चर है, देख वो पिक्चर, मजा आ जाएगा तेरे को. अमेजिंग. ये भी वैसा ही है, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर, उसके ऊपर उसने कैसे बनाने का कोशिश किया पिक्चर. मस्त है, बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया. He is also inspired some directors to make a film on him, which I think will come very soon.
Yeah, I think this is also a great career option. While there is the market of creative people trying to get the best director or best movie awards, अरे we Hmm. should get the worst movie or the worst director award. वो भी is a good market हाँ to एकदम but explore. there is a market for it, like people are waiting for like bad movies, like terrible movies, to have a great time. I Yeah, think there is a yeah. fan base for it, like गुंडा वुंडा सब जो हम लोग बोलते हैं. I mean, those are गुंड like ridiculous movies which we love, right? So that's why. yeah, गुंडा तो कल्ट है वीरू. वो तो वही तो वो ये भी cult है. So I think people who have not watched this should definitely watch it. I mean, 100% definitely देखना चाहिए इसको. मैंने मूवी पे देखा, but it is available for free on YouTube. Anyone can watch superb. it. I think the smoker crew should kind of get all the munchies in one place one night and all your friends and just watch this film. It's going to be a blast. Absolutely. Yeah, that sounds like a plan. Everyone, do remember, this is a great plan that we have given you on this show. Yeah. And if you've already seen it, please let us know your favorite scenes from the film, man. Exactly. Like from the first scene to the last, every scene is worth talking about. There are so many things. This film can turn into spot the chindigiri also. Like carpet kahan dikha, boom mic kahan dikha, fake prop kahan dikha, सब चीज हो सकता है यहाँ पे. जो क्या बोलते हैं वो पायलट जो मेन हीरो दिखाया है वो पायलट रहता है. वो भी बंदे को ऐसा मतलब उसको जबरदस्ती लेना पड़ा बिकॉज प्रोड्यूसर बोला मेरे को मेरा बेटे को ऐसा ये इसको लेना पड़ेगा तो लिया. करेक्ट. तो अभी एवरीवन इज एक्टिंग सो ब्यूटीफुली इन दिस फिल्म. हमारे ट्रेन का ड्राइवर जो ड्राइवर्स कंपार्टमेंट है वो ये कॉकपिट से बेटर है. It was that cockpit didn't look like a cockpit of an aeroplane. So it's a fun movie. Yeah. It's a fun movie. Yeah. If you've already watched it, do let us know in our comments anything about the film that we missed, and do follow us on various channels and send in your recommendations, guys. Please do that. Yes, please do that so that you can also come and be featured on the show and discuss such movies with us as well. Absolutely. We are waiting for worst movies ever made. Bye.